रहीम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले मैं उसकी मेन हेडिंग दे देता हूँ, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी then we will discuss it. DNA recombinant technology, popularly known as genetic engineering, aim at synthetic the recombinant DNA which contain DNA from two different sources. In order to produce recombinant DNA, the following steps are required. So first of all, सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ़ कर देते हैं, इसकी तारीफ़ लिख देते हैं। Then recombinant DNA technology, so मैं इसकी पहले तारीफ़ लिखता हूँ। Recombinant DNA technology, popularly known as genetic engineering, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। एम्स एट, जिसका मकसद है, मकसद क्या है, जिसका सिंथेसाइज करना, रिकम्बिनेंट डीएनए, which contain जो कि contain करता है the similarities from both organisms, contain DNA, यानी कि दोनों से वो DNA from two different sources, दो मुख्तलिफ sources से वो क्या करता है, DNA रखता है। So in order to produce recombinant DNA, following steps are required. So one by one, following steps are required. Following steps required to produce recombinant DNA. Recombinant DNA. To produce recombinant DNA, we require the following steps. Okay. We require the following steps. So I move forward and write the other properties. Number one. Okay, one by one. I write the steps one by one. Genes of interest, which is to be cloned. A gene of interest, which is to be cloned. जिसको हमने क्या करना होता है, cloned. Molecular scissors to cut out the gene of interest. Molecular scissors to cut out gene of interest. जो हमारा मुतलका जीन है जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं, उसको कट करने के लिए यूज़ होता है। Now the molecular carrier or vector, molecular carrier or vector या vector on which जिसके ऊपर gene of interest could be placed. Gene of interest could be placed, जिसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लेस
किया जाएगा। दैट इज़ द स्टेप 3। द फोर्थ जो चौथा स्टेप है, द जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद द वेक्टर। The gene of interest, the gene of interest along with the vector, along with the vector के साथ क्या किया जाएगा, is then उसको then क्या किया जाता है, introduced, उसको introduced करवाया जाएगा, will be introduced into an expression system, into an expression system, एक expression system के अंदर उसको introduce करवाया जाएगा, as a result of which, as a result of which, जिसके नतीजे में a specific product, a specific product, जो एक specific product है, is made, एक specific product जो है वो बनाया जाता है। टोटल 4 पॉइंट्स थे, 1 बाई 1 हमने इनको स्टडी किया था। मैं 1 बाई 1 इनको अंडरलाइन करता हूँ। नंबर 1, gene of interest which is to be cloned. Number 2, molecular scissors, it means endo restriction nucleases, okay, restriction endonucleases enzyme. Number 3, molecular carrier यानी कि वेक्टर जिसके ऊपर हम बिठा के उसको लॉन्च करवाएंगे एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर। और नंबर 4, एक्सप्रेशन सिस्टम as a result of which specific product is made. That was a brief tutorial on the recombinant DNA technology. So goodbye for today। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।